Good day to all. My name is Amreen Khan. I am TA from ECNE Department, Faculty of Education, University of Sindh. Today is your 12th week from curriculum and textbook, and this week consists of physical aspects of textbook. It consists of a paper, size, paperback, binding, lamination, dust cover, or the internal aspects of a textbook. But before we start the aspects of a textbook, there are some summarized qualities of internal and external aspects of a textbook we stated there. Qualities of an effective or a good textbook. The appearance of the textbook should be appealing with an attractive cover page. As I was told you, the graphic designing or the illustration should be as attractive that appealing the target audience you have to be read it. The paper used in the textbook should be superior quality. So the quality of the paper should be superior, or as we notice that the primary class students not really take care their courses, the quality of a paper should be superior for their reliable duration. The printing should be bold and easily readable. The binding of the book should be strong and durable. The price should be moderate. The price range is easy to purchase everyone. It should be written in accordance with the aim and objectives of a teaching the subject in the particular class. It's fulfill the aim and objectives of the class that the book is written. It's according with the aims and objective of a teaching. It should be prepared according to the prescribed syllabus, and every aspect of the syllabus should be equally covered. It means that his syllabus prescribe the every aspects of the syllabus. It means that your book should be covered the all domains, physical, cognitive, or the affective domains. It's talk about the all aspects of a everyday life. It should be written by qualified, experienced, and competent teachers or the committee or expert constituted for the purpose. As I was stated in a textbook development in a Pakistan, there was a team, the team of referees. The team of referees included the subject specialist or the textbook team. So, the qualified, experienced, or competent teachers committees are called the team of referees, experts who constitute this purpose. It should be written in a simple and easily understandable language, and the presentation should be within the grasp of the students. It means the language is understandable to the students, and students are easily pick the knowledge from the content. The style and vocabulary used should be suitable to the age group of students for whom the book is written. जिस एज ग्रुप के लिए ये बुक लिखी गई है अकॉर्डिंग टू उस एज ग्रुप के आपने वहां पर लैंग्वेज उसका स्टाइल और वोकेबलरी देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वी आर यूज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इन अ स्मॉल क्लासेस or we use the very easy language in a higher classes. तो according to age group, क्योंकि अगर आप छोटी क्लासेस में डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करती हैं तो दे आर नॉट यूज टू open the dictionary or use the dictionary. But if we use the difficult vocabulary on our higher classes, they are well known about using the dictionaries. It should relate classroom learning to the real life need and a physical and social environment of the learner. This point emphasizes on all domains that have to be covered in a textbook.
whether it's a psychomotor, whether it's effective, or whether it's a cognitive. We know very well the classroom is or the school is called a miniature society. To the all foster students have to be knows about the social environment, about the learnings, about the physical activities, about the real needs of the society. It should foster students the right attitude toward self-study and self-reliance among students by suggesting project work, field work and the laboratory work. Its mean is that कि यहाँ पर अपने students की upbringing ऐसे करनी है कि they are capable towards the self study और self reliance. उसे खुद से पढ़ने का शौक हो, वो खुद से बुक को खोले और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। और आप ये कैसे कर सकते हैं? टीचर ये ऐसे कर सकते हैं कि जब आप उन्हें प्रोजेक्ट वर्क देंगे, जब आप उन्हें फील्ड वर्क देंगे, जब आप उन्हें लेबोरेटरी में ले जाके प्रैक्टिकल करवाएंगे, these are enhancing the qualities of the students towards the self study and self reliance. It should make provision for the recapitulation of the subject taught in a previous classes. Means कि you have to be the book have to be summarize the previous subject in our recent classes. उसमें कोई ना कोई झलक थोड़ी बहुत सी रिसेप्चुलाइजेशन समराइज करें प्रीवियस टॉपिक को कमिंग बुक में ताकि उनका रिवीजन होता रहे. It should provide the accurate and up-to-date content, as we know that the curriculum is a continuous process that have to be changed as the era change, so your book should be up to date. The content should have a direct practical and social utility of values, as I was told you. It should be practical or the have the social utility values कि आपका स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के बाद सोसाइटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके. The presentation of a subject matter must be attractive and interesting with the appropriate illustration in terms of a picture, diagrams and figures. Diagrams, pictures and figures enhancing the knowledge material because it's a material of a illustration. आप उन्हें illustrate करते हैं मीन्स पढ़ाते भी हैं और फिर दिखाते भी हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ illustration कि उनका जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको आप कॉन्क्रीट में लेकर आते हैं, रियल वर्ल्ड में लेकर आते हैं. एज वी हैव डिस्कस द थर्स्टी क्रो स्टोरी कि एक पूरा पिक्चर जो है उसने स्टोरी डेवलप कर दी. इट्स काइंड ऑफ अ illustration. तो पिक्चर्स, डायग्राम्स और फिगर्स आर used for the good presentation of the subject matter. It should provide for individual differences. It should meet the needs of the students of a varying abilities, interest and the attitude. It's mean that कि बेटा being a teacher हमें पता होना चाहिए we know about the individual differences. Individual differences mean in your class the students have the different abilities. हर स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं होगा. हो सकता है कि वो दूसरी क्वालिटी में अच्छा हो सकता है वो पीटी में अच्छा हो सकता है वो गेम्स में अच्छा हो. तो मीन्स कि बुक को कवर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरिंग डिफरेंट होती हैं, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, उनका एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ स्टूडेंट्स टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू enhance their vocabulary और वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, तो some students take an interest in exercises. कुछ को समरी लिखने में मजा आएगा, कुछ को वर्ड्स मीनिंग में मजा आएगा, कुछ को एक्सरसाइज करने में मजा आएगा और कुछ प्रैक्टिकल्स करने में इंटरेस्टेड होंगे. तो these kinds of individual differences, तो book should meet the need of the students according to their abilities, according to their interest and the attitude.
It should give well graded exercises at the end of the topic to satisfy the needs of the all types of students. The exercises should be fulfill the needs of all types of students. इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर सके और इतनी इजी नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको मिनट में मीन्स यहाँ पर जो है वो वेल ग्रेडेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर कॉग्निटिव लेवल होनी चाहिए. Now the last point is it should contain sufficient provision for revision, practice and review. It should satisfy the demands of examination. It means that the content should be sufficient for the practicals and review and also satisfy the demand of the examination. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें पढ़ कुछ रहे हैं, पढ़ाया कुछ जा रहा है और एग्जाम्स में कुछ आ रहा है. ठीक है बेटा, these are the points. Hope so you understand. If you have any question, you can ask me. अच्छा जी, क्लियर है. ये तो मतलब कि इंसान दो ही तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता, या तो उसको सब समझ में आ जाता है या उसको कुछ समझ में नहीं आता. तो आप बताएं क्या मिजाज है कि कुछ समझ नहीं आया या सब समझ आ गया? मैम ये इजी था वैसे. इजी था ना ये आज का आपके लेक्चर टॉपिक्स? जी. हाँ, बस आज का नहीं है, अब आपका जो स्टार्ट हो रहे हैं ये इजी हैं. अब हम इसको डिटेल में इसके फिजिकल क्वालिटीज एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और फिर इंटरनल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे. तो सारी बातें तो हमें पता है, लेकिन बस टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आपको याद करनी पड़ती है. ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. अल्लाह हाफिज.